Hello everyone, welcome back to the channel. So next topic is about MAT, as we're talking about tax administration system in India. So MAT is a minimum alternate tax. So globally, India एक ऐसी country है amongst the global countries that retains an AMT in its direct tax law. So AMT, it is termed the minimum. MAT भी बोल सकते हैं AMT. तो minimum alternate tax is still there, operating with the MAT credit carry forward mechanism. So alternative minimum tax का example है minimum alternate tax. It is a provision which is introduced in the direct tax law. So this is an example of direct taxation to limit the tax deduction, जो exemptions है. जब हम बात करते हैं ना tax avoidance की, कि companies accountancy measures ऐसी with the help of again सीए जो यूज करते हैं कि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, तो उसके लिए वी इंट्रोड्यूस द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. सो दिस इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल ऑन दी कॉर्पोरेट्स जो बैलेंस शीट होती है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, so they have to pay a minimum amount of the tax to the government, so as to again avoid this tax avoidance. So this allows the company to carry forward the excess tax it pays because of the MAT, and in a particular year to be utilized in future years the credit against its regular tax liability. The complexity in computing this book profit वही balance sheet जो accounting है. Under the MAT provisions, recent changes in accounting standards, they have further increased tax compliance burden for the companies. तो एक इसका negative impact भी हो रहा है, but we need to be clear with कि MAT का objective भी क्या था. So this was tax avoidance को डील करना और वो ना हो उसको कम करना. कॉर्पोरेट्स के ऊपर डायरेक्टली जो उनका बैलेंस शीट है उसके ऊपर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वाज इम्पोज्ड. सो मैट क्रेडिट डिफरेंस बिटवीन टैक्स द कंपनी पेज अंडर मैट एंड जो उनका रेगुलर टैक्स है. तो जैसे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी मैट क्रेडिट जो कैलकुलेट किया जाता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस जो कंपनी ने टोटल टैक्स पे किया अंडर मैट और जो रेगुलर टैक्स पे किया, तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो कंपनी को एज अ फॉर्म ऑफ मैट क्रेडिट वापस ट्रांसफर हो जाता है. सो दैट्स देयर. So this method ensures company will always pay a minimum tax even in a year in which it sets off its MAT credit against the regular tax. So minimum alternate tax across countries, if we go by the examples Argentina, Australia. So ये इतना हमारे लिए important नहीं है, as can just talk about 1% the value of specific corporate assets. Austria में it is 5%. USA and India में on companies termed as MAT, तो 18.5%, USA में it is 20%. So unadjusted book profit के ऊपर MAT applicable होता है. MAT rates and regular tax rates for the companies क्या है? So MAT currently, MAT rate जो it stands at 21.55% against the top corporate tax rate इंडिया में जो है, जो maximum है 35% है. Data shows कि जो MAT rate है started off at about 21% और जो regular corporate tax currently stands at a high of 62% for the corporate tax rate. सो जो हाईएस्ट अगेन मैट के अंडर भी रेट आता है 62% भी होता है कुछ केसेस में. तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो मीट हो रही हैं तो 62% एप्लीकेबल होता है. बट ऑल दो विल टेक इट टू बी 21.55% इज द मैट. जो नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वी कैन से 25% है जनरली, तो ये भी मैक्सिमम रेट है 35% का. तो 21.55% और 25% के बीच में जो डिफरेंस होगा टैक्स अमाउंट पे करने के बाद वही मैट क्रेडिट कैलकुलेट किया जाता है. So here we are seeing the evolution also कैसे tax rate change हुआ मैट में 2000 से लेके 2018-19 तक. तो it was at including surcharge or cess it was at 8%. So it is gradually, you can say it is increased 21.55%. And your minimum tax rate on the corporates under regular provision. So एक corporate tax rate की बात हो रही है 38.5% सा, तो 35%. So इसके बाद we can say 25% तक है. Then structure of tax mix Asia Pacific countries में and OECD tax composition. So if we look at India, तो India में we go by the figures. तो यहाँ पे firstly जो डार्क ब्लू है that is taxes on goods and services एक major component है. उसके बाद taxes on international trade, red is income tax जो corporate taxes हैं, and then we have income taxes on the individuals. So this is the corporate tax, this is income tax. तो ये these are the figures, पता नहीं कौन सी ईयर की मेंशन नहीं है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ जीडीपी.
सो अदरवाइज अगर हम बाकी कंट्रीज में देखें तो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि आपका जीडीपी साइज कितना है. सो ओवरऑल वी आर सीइंग कि मेजरली जो ओईसीडी और एशिया पैसिफिक कंट्रीज है, मेजर शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू इज फ्रॉम द टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो डार्क ब्लू पोर्शन है. तो इंडिया में ऐसा नहीं है. सो क्रिप्टो टैक्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, बिकॉज दे आर वर्चुअल इन फॉर्म, फिजिकली दे आर नॉट टैंजिबल. सो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बट होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू सिमिलर टू द फिजिकल एसेट्स. सो एग्जांपल्स बिटकॉइन, इथेरियम. सो बिफोर 2020 क्रिप्टो करेंसीज रिलेटेड वर्चुअल एसेट्स दे वर नॉट taxed in India. So 2022 के financial budget में we introduced the changes regarding the regulation of cryptos. So investors or the traders are they're liable to pay 30% of taxes plus applicable surcharge भी होगा और 4% cess भी levy किया जाएगा by CBDT. So this is direct tax का example है. एंड जो प्रॉफिट्स होंगे उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स फ्रॉम 1 April 2022. Plus 1% TDS would also be deducted at source as a part of Income Tax Act. And अगर this would be when जब आपका transaction exceeds ₹50,000 and ₹1 lakh. So in certain cases same financial year में, so then 1% TDS would also be applicable. So India exchanges automatically deduct this TDS while individuals trading in the foreign exchange. तो even जब कैपिटल मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करते हो तो तब भी आपको TDS पे करना पड़ता है, विच इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड. देन नाउ अगेन क्रिप्टो को हमने बात करी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर भी द क्रिप्टो सेक्टर हैज बीन ब्रॉट सो दैट जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ब्लैक मनी के केसेस हैं, वो ना हो. एंड इन दिस केस टोटल इनकम, it is below the maximum amount of income not chargeable to tax less than ₹250 lakhs, 2.5 lakhs, sorry. Therefore, tax on the income other than, ठीक है, ये टेक्निकल है. सो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज एंड टैक्सेस की बात की गई, तो दे आर टैक्स इन इंडिया. So, for example, tax on airdrops. So, airdrops, which receiving initial tokens or coins before the launch of the crypto project, is subject to taxation. So, taxation of airdrop depends on factors such as value of the tokens. Tax on crypto gifts, this is also taxed. So, अगर the value is ₹50,000 and less, तो आपको कोई crypto gift tax पे नहीं करना पड़ेगा. टैक्स ऑन NFT नॉन फंजिबल टोकन्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी डेफिनेटली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर नाउ सब्जेक्ट टू टैक्सेशन. तो NFTs एक फिएट करेंसी है, नॉट टैक्सेबल. बाइंग इज नॉट टैक्सेबल बट परचेजिंग देम विद क्रिप्टो करेंसीज ट्रिगर्स टैक्सेशन. यहाँ पे भी 1% TDS इज देयर ऑन द सेल ऑफ, अगर आप NFTs कर रहे हो and you're dealing in cryptos. तो tax on crypto mining is also there. तो हमने बात करी crypto mining illegal नहीं है. So mining income generated from the crypto mining is also taxable. And tax on crypto staking. तो crypto staking it involves earning rewards from holding and validating transactions on blockchain network. So staking is like withholding. आप एक टाइम के लिए hold on कर रहे हो जो आपने पैसा लगाया. तो staking income is also taxed. टैक्स ऑन क्रिप्टो सैलरी हमने बात कर ली, 30% वुड बी एप्लीकेबल. टैक्स ऑन क्रिप्टो रेफरल्स, तो इवन रेफरल्स बात की जाती है, इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो इन दैट केस ऑल्सो जो बोनसेस अर्न करते हो आप क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म से, उसके ऊपर भी टैक्सेशन है. तो कितना एक माइन्यूटली हर एक चीज के ऊपर टैक्सेशन किया जा रहा है. टैक्स ऑन टोकन सेल्स लाइक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग्स आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन. तो यहाँ पे बस हमें पता होना चाहिए कौन किन एरियाज में टैक्सेशन है. प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सिंस cryptos are under this, so crypto entities will be obligated to record transactions, client data, monitor compliance and report the suspicious activities. KYC becomes important, mandatory. So इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने FTX की बात करी थी जो स्कैम हुआ था, and that was related to cryptos. सो टैक्स एंगल से नेविगेटिंग क्रिप्टोज हमने बात कर लिया, 30% टैक्स वुड बी देयर. एंड चूजिंग द राइट एक्सचेंज, जब आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट की बात करते हो.
So record keeping important है. So this is a part of regulation or the part of the exchanges, crypto exchanges जो exist करते हैं. And ये repeated areas हैं. Staying updated, what changes are being done as far as crypto is concerned. Next topic would be about the global minimum tax, जो इससे different है. So यहाँ पे कोई doubt? It is just about कि इंडिया में हम क्रिप्टोज को कैसे रेगुलेट, कैसे टैक्स कर रहे हैं. एंड कुछ दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में बात करी थी कि यूएसए ने सबसे पहला जो है ईटीएफ लॉन्च किया है इन क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइन. तो वहाँ पे भी हमने बोला था कि आरबीआई का स्टैंड इट रिमेन्स अनचेंज्ड, बट एज पर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशन, दे से कि कंप्लीटली बैनिंग ऑफ क्रिप्टोज इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यू आर रेगुलेटिंग इट. क्योंकि आरबीआई का पहले स्टैंड ये था कि दे वर talking about and thinking about completely banning the usage of cryptos in India. So that's all in this part. Thank you so much for joining us on Ansarkari. Do subscribe to our channel.